Hello students, this is my new video on class 10th science first chapter. Before this I have uploaded for class 9th. I'll be covering the course for both class 9th and class 10th. So hereby first chapter of class 10th, that is chemical reactions and equations. It is also a part of chemistry. So both class 9th and 10th NCERT have the first part of science as chemistry. Now, as the name subjects of the chapter, that is chemical reactions and equations, I will make you understand the meaning of all the three words before, and also let me tell you that along with this chapter I will be introducing you to various general and basic concepts of chemistry as well. That is very important to understand the chemical formulae. So, chemical, the first word chemical, we all know, we've been studying it, listening it since our childhood. Even if you have studied well chemistry before or not, I'm starting this from very scratch. Chemical is a product, or is any substance, rather I should say, which is having some type of properties, which is having some type of it's having some type of activities which, when made to interact with something, changes its own state. If I refine it in simple terms, एक ऐसा substance या ऐसा कोई चीज़ जिसको आप जब किसी भी चीज़ के साथ जोड़ो या किसी के साथ उसको इंटरैक्ट करवाओ तो वो एक नई चीज़ बन जाती है. That is what a chemical is. Right? We say a lot of things to be a chemical in our daily life. What do we call? We call phenyl as a chemical, right? Now, why is phenyl? Phenyl is a very simple product which is used in our home cleanings. We call phenyl as a chemical. You might have heard many times your parents, your mother speaking that this is a chemical, please don't touch it with bare hands, or do not try to come in contact with it. Yeah, there are certain things which are kept away from the children by saying it's a chemical. And you might have all definitely heard about acids, how dangerous they are. They are also very harmful, like they can also burn us, right? So these are all the categories of chemicals. Why are they called chemical? Just because they are tending to change into something which is another type of product. Simple, if you add phenyl to water, what happens? Its smell is seen all over, right? The color of water changes, right? Whatever the color of phenyl is, the water takes its color as well, right? So it has changed the property of water also, it has changed its color, right? So these are certain things which a chemical tends to do. Now, the second word is reactions. If you take out the meaning of reactions in Hindi, is रिएक्शन का मतलब होता है इंटरैक्शन, मतलब आपस में उनका जो भी रिलेशन बनता है. सपोजिटली एक चीज़ अगर हम दूसरे के साथ मिक्स कर रहे हैं तो वो क्या बनेगी, दैट इज़ अ रिएक्शन. ठीक है, अ सॉर्ट ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू प्रोडक्ट्स. वो दो आपस में मिलके क्या बनाते हैं, तो वो जो मिल रहे हैं आपस में, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज अ रिएक्शन. Right? So that interaction is basically called as reaction. For example, आपने फिनाइल और पानी को ही मिलाया है, उसके बाद जो वाटर बना है that is having the smell of phenyl, that is okay. But the time when phenyl and water you have mixed in the bucket, तो आप देखेंगे कि कैसे वो फिनाइल तुरंत के तुरंत पानी में स्प्रेड हो जाती है, राइट? सो दैट पॉइंट जब दैट फिनाइल इज मिक्सिंग विद वाटर, दैट टाइम इज कॉल्ड एज रिएक्शन. दैट थिंग विच इज हैपनिंग इज कॉल्ड एज रिएक्शन. सो केमिकल का रिएक्शन, दैट इज केमिकल रिएक्शंस. किस तरह केमिकल दूसरे चीज़ के साथ इंटरैक्ट कर रहा है या जुड़ रहा है और क्या आगे वो बना रहा है, उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन. दो बातें और, जो चीज़ें आपस में मिलती हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, जो नई चीज़ बनती है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट. जैसे फिनाइल और वाटर में ही फिनाइल और वाटर दो अलग अलग चीज़ें आपने मिक्स की तो वो दो अलग चीज़ें बनेंगी हमारी रिएक्टेंट्स, जो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रही हैं, मिल रही हैं. वो मिलके एक वाइट कलर्ड वाटर बना रहे हैं जिसके अंदर फिनाइल की स्मेल हो रही है, तो जो वो बना है दैट इज़ द प्रोडक्ट.
राइट. सो एक तरफ रिएक्टेंट्स हैं, वो दोनों मिले और उन्होंने क्या बनाया, एक प्रोडक्ट. अब आप जनरली देखेंगे हम केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, दो चीज़ों को हम जोड़ते हैं एंड देन वी पुट एन एरो एंड वी से एक नई चीज़ बनी है, राइट. सो दैट इज़ एन इक्वेशन. तो इक्वेशन बेसिकली एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा वे ऑफ राइटिंग है जिससे हम एक रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं. लाइक टू राइट एनी वर्ड वी यूज़ अल्फ़ाबेट्स. कोई भी वर्ड बनाने के लिए हम अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं. सिमिलरली कोई भी केमिकल रिएक्शन दिखाने के लिए हम केमिकल इक्वेशन का फॉर्म यूज़ करते हैं. आई विल बी टेकिंग अप इन डिटेल कि केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखा जाता है, राइट हैंड में क्या रखा जाता है, एरो कहाँ डलता है, कहाँ रिएक्टेंट्स लिखते हैं, कहाँ प्रोडक्ट्स लिखते हैं, वो सब इस चैप्टर का पार्ट है. राइट. नाउ स्टार्टिंग ऑफ विद द चैप्टर, आई होप यू आर क्लियर कि हम पढ़ने क्या वाले हैं. हम बेसिकली केमिकल और उसके अलग अलग तरह के रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं. सो व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस? केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच new substance with new properties are formed. That is what I told. कोई भी दो चीज़ें जब मिलती हैं और नया प्रोडक्ट या नया सब्सटेंस बनाती हैं जिसकी अलग ही प्रॉपर्टी होती है, राइट, दोज आर कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शंस. वो प्रोसेस उन्हें हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं. फिनाइल और वाटर में भी जो नया वाइट कलर वाटर बना है उसकी क्या प्रॉपर्टी है, वो नॉर्मल वाटर से डिफरेंट हो गया ना. आप खुद ही देख लीजिए, नॉर्मल वाटर वी ड्रिंक, बट कैन वी ड्रिंक द वाटर विथ फिनाइल? नो, ऑब्वियसली इट्स अ टाइप ऑफ poison because phenyl has been added to it. तो हो गई ना वाटर की प्रॉपर्टी चेंज, राइट. That is how these chemical reaction takes place. Now this phenyl and water was just to explain you because that is a very basic example which we see in our daily lives. हम बचपन से देखते आए हैं. The other certain examples are also very well known to us. These are soaring of milk. Now what do we call as soaring of milk? Soaring of milk क्या होता है? You might have seen in summers when you keep milk outside for a longer time, right, it has grown old, like you have bought it from the market 3-4 days back and then since you've not boiled it, it is kept outside only. So even after a day in hot summers when you again boil it, what will you see? कि दूध फट जाता है बीच में से. You see that the milk is separating and some solid substances coming out of it. That is we see कि उसमें से वो फटने लग जाता है. You might have heard your mother saying कि आज दूध फट गया. So that is what a soaring of milk means, right. So this is also a chemical reaction. Normal milk is a product. ये एक substance है जिसे we use in our daily life, but when it gets sour, जब वो पड़े पड़े ख़राब हो जाता है, और वो ख़राब कैसे होता है? Because due to the excessive heat जो बाहर summers में होती है, उसकी वजह से that milk tends to undergo a chemical reaction by itself. और उसके बाद जब आप उसे और हीट प्रोवाइड करके हीट करते हैं, देन इट इमीडिएटली एक्सपैंड्स और वो फट जाता है, राइट. उसके अंदर के प्रोडक्ट्स बाहर आ जाते हैं. सो दिस इज़ व्हाट अ सोरिंग ऑफ मिल्क नीड्स टू. कुकिंग ऑफ फूड, वी ऑल नो अबाउट कुकिंग ऑफ फूड. हम raw vegetables लाते हैं and the vegetables we eat are entirely different, right. They have a certain type of cooked sense in them. Potato, take an example of simple potato. Potato in the market is so hard, you know, when we get it, can we chew it with our teeth at that time? No. But when we cook it, we make it properly, we boil it, we are obviously having it. So what is the property it has changed? When potato has come in contact with heat, when you have made it reacted with heat, if I use the language of chemistry, how will I say? When potato in water was reacted with heat, it became softer. So a new substance which was formed was now a soft potato, right. Next is digestion of food. Now what do you say about digestion of food? We all know that we have a digestive system. By now obviously we have studied since in our junior classes, stomach is our main digestion organ. And even if you've not, we all know कि खाना जब हम खाते हैं तो सारा कहाँ जाता है? पेट में. And then we say that stomach के बाद सब digestion होके intestine उसमें help करती है and then we excrete it out of the body. So you all can figure it out that the food we eat and the excreta we pass out,
in the morning, two are entirely in different forms. That means that same food has gone inside our body, has interacted, or I say that the reaction of food and its product has taken place inside the body, and then they have turned into semi-solid substances which come out as excreta from our body. I hope you have understood it. It is our daily life example only. Rusting of iron, this is a also a thing which we observe in our daily life, but we do not like exempt it out very clearly. Now you might have seen an iron rod simply kept, any iron substance. You forget about an iron rod in your houses. We have windows, right? So mostly in our houses, if we have window, we have iron railings on it. So you can see after some time that railing, if it's not painted, it is without paint, you will see that the railing, when we had put it, it was brown in color, but after some time it has turned reddish brown. Why has that turned reddish brown? क्योंकि उस आयरन के ऊपर देयर इज डेपोजिशन ऑफ एयर का ऑक्सीजन. आयरन एक मेटल है जिसकी टेंडेंसी होती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने की, और हमें पता है हमारी एयर में 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है. आई होप आप सबको पता होगा कि आयरन एक मेटल है, एंड इफ नॉट ऑल्सो यू कैन लर्न इट नाउ दैट आयरन इज अ मेटल. तो उस मेटल की टेंडेंसी होती है कि वो बाहर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाए. जब वो आयरन उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है तो वो एक प्रोडक्ट बना लेता है इस आयरन के ऊपर ही, जो रेडिश ब्राउन कलर का दिखता है, राइट. सो इसीलिए दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रस्टिंग ऑफ आयरन. ये आपके पास डिटेल में है इस चैप्टर में, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू अ रफ एग्जाम्पल ऑफ योर डेली लाइफ ओनली. इट हैज़ नथिंग टू डू विद केमिस्ट्री. तो ये सब एग्जाम्पल्स हमारे केमिकल रिएक्शंस के थे. अब इन्हीं केमिकल रिएक्शंस में कुछ केमिकल चेंजेस भी होते हैं. अब क्या केमिकल चेंजेस होते हैं वो हमें पढ़ना है. वी आर सेइंग दैट केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग. ऑब्वियसली रिएक्शन हो रहा है. रिएक्शन कैसे हो रहा है? कोई भी दो सब्सटेंसेस आपस में मिल रहे हैं, या किसी भी एक सब्सटेंस का सब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं या कुछ भी उस करके उसे रिएक्ट करा रहे हैं, तो वो एक नया प्रोडक्ट बना रहा है जिसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट है. लेकिन होता क्या है एक्चुअली केमिकल रिएक्शन में? हमने ये तो पढ़ा कि दो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, लेकिन उस रिएक्शन में क्या होता है वो हमें इसमें पढ़ना है. तो उस रिएक्शन में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स. अब 9th क्लास में आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर. नहीं भी पढ़ा होगा तो हम सबको पता है कि इस वर्ल्ड में जो भी चीज़ जिसके पास मास है, जिसके पास स्पेस है, वो मैटर है. और उसके बाद हम एक लाइन और भी जानते हैं कि हर चीज़ इस दुनिया में छोटी छोटी एटम्स की बनी हुई है. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज एटम. तो वो एटम्स जब हम दो चीज़ों को रिएक्ट कराते हैं, वो एटम्स अपनी पोजीशन बदल लेते हैं. सपोजिटली एक सब्सटेंस में एटम्स वर अरेंज्ड डिफरेंटली, दूसरे में दे वर अरेंज डिफरेंटली, बट जब हम उन दोनों को मिक्स करते हैं तो वो एटम्स एक दूसरे के साथ अपनी पोजीशंस बदल लेते हैं, और उन एटम्स के पोजीशन बदलने की वजह से दैट रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस. सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल जिसकी वजह से एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है. Obviously when the atom of both the substances are mixing together with each other to form a new set, then obviously a new product will form, right? So this is the first chance of a chemical reaction. Second is breaking up of old chemical bonds. Now when we are saying that there is rearrangement of atoms, atoms के बीच में क्या होता है? How are atoms combined to each other? Atoms एक दूसरे से जुड़े होते हैं केमिकल बॉन्ड्स की वजह से, राइट? उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड होता है. हम सब ने पढ़ा है कि कोई भी दो एटम्स होते हैं अगर, तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी वजह से होता है? एक बॉन्ड की वजह से. और उसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड, राइट? नहीं भी पढ़ा होगा तो यू माइट हैव नोन कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस 3 स्टेट्स होती हैं जिनकी पार्टिकल अरेंजमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है. उसके बीच में हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता नहीं शायद 2nd-3rd क्लास से पढ़ते हैं, राइट? सो दिस इज अ वेरी सिंपल फिनोमिनन. आई होप एवरीबडी माइट बी नोइंग. सो व्हेन दैट बॉन्ड ब्रेक्स बिटवीन 2 atoms and those atoms change their position from one place to another, that is also a
significance or indication of a chemical reaction taking place. obvious सी बात है, अगर एक एटम अपनी जगह से हट के दूसरी जगह पे जा रहा है तो दैट मीन्स वो ऑब्वियसली उस बॉन्ड को तोड़ के ही दूसरी जगह पे जाएगा, राइट? जैसे हम अगर अपने घर से दूसरे के घर जाते हैं, वी डेफिनेटली ओपन द डोर एंड लीव until unless that door is between us and we do not have the key to that door or access to break it, we cannot go from one place to another, राइट? सो उस बीच के बॉन्ड को तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है. दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग इन अ केमिकल रिएक्शन ऑल्सो. फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स. अब अगर एटम एक जगह से टूट के दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो दूसरी जगह पे जाके वहाँ पे रुकने के लिए भी उनको एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की ज़रूरत होगी, और वो भी किसकी वजह से आएगा? केमिकल बॉन्ड की वजह से. सो दिस इज़ हाउ वी कॉल इट एज फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स. तो 3 चीज़ें हुई जो होती हैं. सबसे पहले ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड, कि पहले केमिकल बॉन्ड टूटा. सेकेंडली एटम रीअरेंजमेंट, जैसे ही बॉन्ड टूटा एटम अपनी प्लेस छोड़ के दूसरी प्लेस पे गए, रीअरेंजमेंट हुई. थर्ड चीज़, जब वो अपनी प्लेस पे गए तो उनको फिर से कोई चीज़ चाहिए थी लॉक करने के लिए अपने आप को. देन दे अगेन डेवलप्ड न्यू केमिकल बॉन्ड्स, एंड दिस इज हाउ सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, राइट? और ये मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया दैट द सब्सटेंसेस जो आपस में रिएक्ट करते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, एंड द न्यू सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड एज products, and these reactants and products react together, they combine together to produce a chemical equation, and that represents chemical reaction, right? So this is how the introduction of chemical reactions and equations could be taught to you. Further we will be studying about its various characteristics. In this lecture I would be only briefing you about the characteristics of chemical reactions. We will study each characteristic in detail. So अब क्या क्या characteristic होती हैं अगर कोई chemical reaction हो रहा होता है तो सबसे पहली evolution of gas, मतलब उसमें से किसी substance का release होना. Simple example है, हमने अभी पीछे पढ़ा कि cooking of food में what happens is you cook any vegetable in a frying pan by turning the burner on, and after some time what do you see that heat rising out from that vessel. So what is being released? Evolution of gas. Secondly, formation of a precipitate. You had added raw potatoes in the vessel. After some time when you had cooked the vegetable, what have you done? You have mashed those potatoes and you have created a product out of it. You have created a little amount of vegetable, so that you can consider it as a type of precipitate. You will not call it as a precipitate. This I am giving an example just to relate it with chemistry later on. So now to take this daily life of yours into this chapter, I am giving the example of this potato, otherwise there is no such example like that. Change in color. Now you also might have seen that potatoes are usually, when you peel them off, they are slightly yellowish in color, right? Light yellowish in color. But when you add them in the vessel in a hot frying oil, soon after 2-3 minutes they turn brown. Even if you have not noticed, you can do it right now and see. If you take potatoes, cut them and put them in the hot oil, you will see that those potatoes turn brown in color. Or even not potatoes, you might have seen if food is cooked for more longer time, वो सड़ जाता है. सड़ के which color it turns to? Black. So that is what is change in color. कोई भी chemical reaction होता है तो उसमें change in color होता ही होता है. Thirdly, change in state. Now, how does state? Can I give you another example of change in state in terms of rice? We have raw rice, right, which are very hard, solid, right? Now, what happens when you boil the rice in cooker or get them a whistle, or you boil in normal water? When they are totally boiled, you will be easily able to press them with your finger. They will become semi-solid, right? So this is how its state changes from solid to they have become semi-solid.
simply water also, if you boil it, later on you will see that half of it has evaporated and then water has turned into steam. So it has changed its state from liquid to gas. Third is change in temperature. This is very phenomenal, very common. How it happens? We cook food, when before putting it in the vessel, it is at the room temperature, but after we take it out from the vessel, it is very hot. So obviously the temperature has risen. So this is how it explains all the five processes, sorry, in the terms of digestion of food only. So I have given you a basic layout that how is a chemical reaction occurring, what a chemical reaction gives, and what are the things which react are called reactants, the formed things are called products. तीन चीज़ें क्या होती हैं जिससे केमिकल रिएक्शन होता है? सबसे पहला बॉन्ड्स का टूटना, दूसरा उन एटम्स का रीअरेंजमेंट होना, थर्डली उन एटम्स के नए बॉन्ड्स का बनना. इसकी वजह से एक नया प्रोडक्ट फॉर्मेशन में आता है. एंड दिस इज हाउ अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. Now here you can see there is an example I have given. This example is taken up from your NCERT only. All these five characteristics which I have explained you with regard to digestion, now you need to imply them into chemistry. See, there is a magnesium ribbon. Magnesium ribbon, if you see, you can get in any of your chemistry labs. Your school might be having chemistry lab. You can go there and ask your attendant for the magnesium ribbon. When you will see that magnesium ribbon, you will see that it is silvery white in color. Silvery white in color. In Diwali, everybody might have littered those fuljadi, right? So it is just like that, silvery white, thoda silver, thoda white color. And we all know that magnesium is a metal. Even if you don't know, learn it now. Magnesium is a type of a metal. I hope you all might not be wondering what are metals, because metals and non-metals is a separate topic which we will study later. If you also don't know, for now just learn this much, that metal is a type of product in chemistry. It's a type of substance in chemistry which is very important. So magnesium is also a metal just like that of an iron. Now what do? We heat this ribbon. जैसे हम दिवाली पे फुलझड़ी चलाते हैं, उसी तरह we light this ribbon, we heat it in the flame. We light a flame and we heat this ribbon. What do we see? That this magnesium ribbon, when we heat it, and what is there in heat? जब भी हम कोई चीज़ जलाते हैं तो उसके अंदर कौन सी गैस होती है? Please remember, whenever we light anything, there is oxygen gas in it. एंड जब भी कोई चीज़ बुझ जाती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है. प्लीज़ गेट दिस इनटू योर हेड. अगर हम किसी चीज़ को हीट कर रहे हैं तो हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं. अगर हम किसी चीज़ को बुझा रहे हैं तो हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कर रहे हैं. दीज आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ दीज टू गैसेस. तो वी हीटेड मैग्नीशियम रिबन विद हीट and then we got a product called as magnesium oxide. I will explain chemical formula of these later. For now you just need to understand the chemical reaction ताकि मैं आपको पांचों प्रॉपर्टीज समझा सकूं. तो क्या बना? साथ में मैग्नीशियम ऑक्साइड बना. जब हमने उस पूरे मैग्नीशियम रिबन को हीट कर दिया, उसके कुछ नीचे हीट करके एशेस बच गए, और वो एशेस थे मैग्नीशियम ऑक्साइड के. तो वो वाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट बन गया, सॉलिड प्रोडक्ट. प्रेसिपिटेट हमेशा एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है, ठीक है. ऑल्सो जैसे फुलझड़ी जब जलती है तो उसके अंदर से बहुत ही अच्छी स्पार्कलिंग इफेक्ट निकलते हैं, उसी तरह दिस ऑल्सो बर्न्स विद अ वाइट डेजलिंग फ्लेम. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 10th, that magnesium ribbon when heated it burns with a white dazzling flame. It can come in your exams in any form, so please highlight it. It is very important. The magnesium ribbon when heated it burns with white dazzling flame to give out magnesium oxide. That is a white powder. So thus we can see that in this reaction, out of all these five characteristics, what has happened? Precipitate has been formed. Formation of precipitate, magnesium oxide. Change in color, it was silvery white in color and now it has become white color. Change in state has not taken place. This was also solid, this is also solid only.
चेंज इन टेम्परेचर, ऑब्वियसली इट हैज़ अकर्ड. ये मैग्नीशियम रिबन रूम टेम्परेचर पे था, सो इट वॉज नॉर्मल इन टेम्परेचर ओनली, बट द मैग्नीशियम ऑक्साइड विच वॉज फॉर्म्ड नाउ, दिस इज very very hot, right? So the only thing which has not happened here is evolution of gas, because heat हमने उसके अंदर involve की है, हमने heat को reaction के अंदर लगाया है, तो obviously it has not been given out. तो ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स इस केमिकल रिएक्शन में हमें देखने को मिली. एडिशनली ये वाइट लाइट जो प्रोड्यूस होती है, इट इज़ हार्मफुल टू आवर आइज. This is an additional point, you can remember it, sometimes question is framed out of it also, that the white dazzling flame which is produced by the burning of magnesium ribbon is harmful to our eyes just because magnesium ribbon के ऊपर ऑक्सीजन की लेयर डिपॉजिट हो जाती है. ये मैंने आपको रस्टिंग ऑफ आयरन में भी समझाया था कि आयरन भी जब बाहर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो मेटल की टेंडेंसी होती है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है. तो मैग्नीशियम भी एक मेटल है, तो जब वो मैग्नीशियम रिबन बाहर पड़ा होगा तो ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और उसके ऊपर एक लेयर बना लेता है. उसी लेयर को उतारने के लिए हम पहले उसकी सैंड पेपरिंग करते हैं और उस लेयर को उतार देते हैं, राइट? तो ये 2 पॉइंट्स आपको मैग्नीशियम से याद रखने हैं. पहला पॉइंट कि जो वाइट लाइट उससे प्रोड्यूस होती है वो हमारी आइज़ के लिए हार्मफुल है. सेकेंडली, मैग्नीशियम रिबन को हीट करने से पहले हम उसको सैंड पेपर करते हैं क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्म हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन दी एयर. और हर मेटल की टेंडेंसी होती है कि एटमॉस्फेयर में या उसके आसपास में जहाँ पे भी ऑक्सीजन है वो उसके साथ टेम्पररीली रिएक्ट कर जाता है, right? So these were the 2 extra points. Even if you have not understood it for now, you can keep them apart. We will discuss it when we will do question and answers. Okay, so this is what about chemical reactions and equations ka introduction. From the next video I will explain all the 5 characteristics of a chemical reaction in detail. The next video will be of that, right? Any problems, any doubts, please let me know through the comments. Thank you very much. Bye.